Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम शेयर बाजार, कारोबार और अर्थ जगत की ताजा खबरें इस कार्यक्रम में आप तक लाएंगे। आइए आरंभ करते हैं हेडलाइन से, जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। India joins OECD and G20 inclusive framework tax deal of global corporate tax. RBI flags emerging threats to economic recovery from soaring commodity prices and new COVID variants. Says the financial system is resilient enough to deal with such jolts. India records the highest ever exports in the first quarter of the current fiscal, and domestic stocks finish with modest gains. भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD और G20 देशों के समूह के कॉर्पोरेट कर की दर से जुड़े वैश्विक समझौते में शामिल हो गया है। आरबीआई ने कमोडिटीज के तेजी से बढ़ते मूल्यों और कोविड के नए वेरिएंट से आर्थिक सुधार के लिए पैदा खतरों पर ध्यान केंद्रित किया। कहा, वित्तीय प्रणाली में ऐसे धक्कों से जूझने के लिए पर्याप्त मजबूती है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का निर्यात अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचा और घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त पर हुए बंद। इससे पहले कि हम खबरों का सिलसिला शुरू करें, हम स्वागत करना चाहेंगे वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन का, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हैं। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सोनू। और अब लेते हैं आज की पहली खबर। भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD और G20 देशों के समूह के कॉर्पोरेट कर की दर से जुड़े वैश्विक समझौते में शामिल हो गया है। वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार OECD के सदस्यों और G20 देशों ने एक उच्च स्तरीय बयान दिया है, जिसमें अर्थव्यवस्था की डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर संबद्ध चुनौतियों का सर्वसम्मति से निकले हल की रूपरेखा शामिल है। प्रस्तावित हल के दो पहलू हैं: अतिरिक्त लाभ का पुनर्वंटन उन देशों को करना जहां से लाभ प्राप्त हुआ है, और कर संबंधित नियमों के तहत न्यूनतम कर की दर लागू करना। हालांकि इस प्रस्ताव के तकनीकी ब्यौरे पर आने वाले महीनों में काम किया जाएगा और उम्मीद है कि अक्टूबर तक सर्वसम्मति से समझौता तैयार हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने आज जारी बयान में कहा कि जिन सिद्धांतों के आधार पर यह हल निकाला गया है, उनसे भारत द्वारा की गई इस मांग को बल मिलता है कि जिन देशों में बिक्री से लाभ कमाया गया हो, उन देशों को कंपनियों द्वारा लाभ का अधिक हिस्सा आवंटित किया जाए। मंत्रालय ने कहा कि भारत ऐसे हल के हक में है जो आसानी से लागू किया जा सके और जिसका पालन करना भी आसान हो। इसके साथ ही इस हल के द्वारा उन देशों, खासकर विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जहां से ये लाभ कमाया जा रहा है, उन्हें महत्वपूर्ण और स्थायी राजस्व उपलब्ध होना चाहिए। शुरू में वैश्विक न्यूनतम कर का प्रस्ताव अमेरिका ने प्रस्तुत किया था। कल OECD और G20 देशों ने भी इसे अपना लिया है। विश्व भर में अलग अलग देशों में कर से जुड़े नियमों में अंतर का गलत फायदा उठाने वाली विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही कर से बचने की रणनीति को विफल करने के लिए सब देश मिलकर इस बात पर तैयार हुए हैं। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 90% से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 130 देशों ने 15% के न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट कर की दर को स्वीकृति दे दी है। इन देशों ने अमेज़न और गूगल जैसी विशाल डिजिटल कंपनियों समेत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ और कर के ज्यादा उचित आवंटन पर भी सहमति दी है। हालांकि इन कंपनियों पर कर की न्यूनतम दर पर सहमति न देने वाले चंद देशों में हंगरी और आयरलैंड शामिल हैं। क्या कहेंगे आप पुनीत, कितना महत्वपूर्ण है ये फैसला? इस पर काफी समय से बातचीत चल रही थी और भारत कह रहा था कि जो ये टेक कंपनीज हैं वो अनुचित तरीके से जो लाभ कमाती हैं उसका कुछ भी हिस्सा कर के रूप में भारत को नहीं देती हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? सुनो, देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव है और पहले ये G7 यानी जो बड़े बड़े कुछ इकोनॉमीज हैं उन्होंने प्रस्तावित किया था, लेकिन इसके ऊपर ग्लोबल एग्रीमेंट नहीं हुआ था। अब OECD कंट्रीज और G20 के द्वारा रेटिफाई हुआ है और 130 देशों ने इसको मान्य किया है, तो अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की संभावना काफी बढ़ गई है। देखिए, इसका मतलब क्या है? जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कई देशों में ऑपरेट करती हैं, वो ऐसा करती हैं कि वो प्रॉफिट शिफ्टिंग करती है। इसको एक टर्म है प्रॉफिट शिफ्टिंग, यानी वो जहां पर काम करती हैं, जिस देशों में, मान लीजिए टेक्नोलॉजी कंपनी है, भारत में काम करती है, वो सोशल मीडिया कंपनी है, भारत से वो रेवेन्यू कमाती है, लेकिन वो रेवेन्यू सीधा बाहर के देश में चला जाता है जहां पर टैक्स कम है और या टैक्स जीरो है।
और भारत को उस रेवेन्यू से कुछ भी फायदा नहीं होता। तो इसे हम प्रॉफिट शिफ्टिंग कहते हैं, यानी जिन देशों में कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम है या जीरो है, वहां पर वो कंपनियां प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती हैं और वहां पर उसका फायदा उठाती हैं, और जिन देशों में वो काम करती हैं, जिन देशों से वो रेवेन्यू कमाती हैं, वहां पर वो प्रॉफिट नहीं दिखाते और वहां पर टैक्स भी नहीं देते। तो ये प्रॉफिट शिफ्टिंग के खिलाफ एक मुहिम है। दूसरा, इसे हम बेस इरोजन कहते हैं, यानी जिस जगह वो काम करती हैं उस जगह वो अपना रेवेन्यू नहीं दिखाते, उसको बेस इरोजन कहते हैं। तो इन दोनों चीजों के खिलाफ, और इससे ये होता है जैसे भारत जैसे देश जहां पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आके काम करती हैं, यहाँ से पैसा कमाती हैं, लेकिन यहाँ पर वो बहुत कम या नहीं के बराबर वो टैक्स देती हैं, वो कंपनियां वैसा नहीं कर पाएंगी। उनके ऊपर अब ये जरूरी होगा कि वो भारत जैसे देश को जहां से वो पैसा कमाती हैं वहां पर वो रेवेन्यू दें, और उस रेवेन्यू का भी एक प्रतिशत 15% मिनिमम टैक्स, यानी अब कोई भी देश ऐसे जो जीरो टैक्स ऑफर करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनको कम से कम 15% टैक्स कंपनियों को देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने एक बहुत बड़ा एक जाल सा बिछाया हुआ है पूरी दुनिया में, और कुछ छोटे छोटे देश, आपने खुद मेंशन किया, छोटे देश हैं, आयरलैंड है, हंगरी है, ऐसे और भी कई यूरोप में बहुत छोटे छोटे देश हैं जो जीरो टैक्स बेनिफिट देते हैं कंपनीज को। अब कंपनीज वहां जाकर अपने हेडक्वार्टर्स बनाती हैं, तो अब वो ये फायदा नहीं उठा पाएंगी। मुझे लगता है कि भारत जैसे देशों को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, एंड डेफिनेटली लार्जर इकोनॉमीज लाइक अमेरिका को भी इस बात का नुकसान होता था कि वहां से कंपनीज बाहर प्रॉफिट शिफ्ट करती थी। ये प्रॉफिट शिफ्टिंग अब बंद हो जाएगी। Puneet, apart from the tax arbitrage, which is now sought to be cancelled out with the imposition of the global minimum tax, what about the labor arbitrage? What happens to offshore outsourcing? Will companies seek the other emerging markets for labor productivity? Or will they resort to operating from their country of origin or the country that is offering the 15% tax like everyone else? See, Arjun, there is a difference between tax arbitrage and labor arbitrage. See, tax arbitrage is an artificial incentive being created by certain countries. But labor arbitrage is a natural advantage of certain countries. Let's say, for example, Bangladesh. Now, Bangladesh has been doing very well in textiles because they have a natural advantage of labor being available at lower cost, and global companies will go to those countries and get the advantage of lower labor cost there. It is a natural advantage of that country. It is not an artificial incentive being given. Similarly, India has certain advantages in labor, and I would say it is India's strength. Like you can say that a technology is a certain country's strength. So I don't think world is looking at cancelling out labor advantages, because that is an inherent strength of an economy. It is the artificial incentives like tax arbitrage, which is just on paper. It is not any value addition per se. I think that is what is being targeted, and not things like labor arbitrage. In any case, labor arbitrage is no longer as stark as it used to be 20 years, 30 years back. I think global wages are also coming to some extent at par, and there are certain standards being implemented. So I don't think the two can really be compared. So पुनीत, बेस लेवल पर क्या हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनके पास जो उपलब्ध, सब गवर्नमेंट्स के पास जो कर की मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी और वो बेहतर तरह से अपना शासन कर पाएंगे, उसके लिए उनके पास रेवेन्यू ज्यादा होंगे, और जो एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनीज जो इस कर से बचने के लिए कहें कि अनफेयर मीन्स अडॉप्ट कर रही थी? बिल्कुल, इसका जो मेन लक्ष्य है वो यही है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े देश हैं जहां पर एक्चुअली कंपनीज बिजनेस करती हैं, उन देशों को फायदा होगा, क्योंकि वहां पर उनको रेवेन्यू मिलेगा। अभी तक जैसे मैंने पहले बताया कि वो बड़े देशों में काम तो करते थे, भारत के देश में टेक्नोलॉजी कंपनीज काम तो करती थी, लेकिन इस प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती थी उस देशों में जहां पर उनको टैक्स नहीं लगता था। यानी भारत से वो पैसा तो कमाते थे, लेकिन भारत को कोई टैक्स नहीं देते थे। तो ये तो हमारे लिए एक नेगेटिव बात हो गई। तो वो बड़ी इकोनॉमीज जहां पर एक्चुअली में ये कंपनीज काम करती है, वहां पर उनको देना पड़ेगा। और छोटे देश जो ऐसे बहुत छोटे छोटे देश हैं, एक करीब एक आइलैंड समझ लीजिए आप हैं, जो
टैक्स इंसेंटिव, आर्टिफिशियल इंसेंटिव देते थे और उससे वहां पर बहुत पैसा इकट्ठा कर लेते थे वो, क्योंकि वो छोटे इस तरह का इंसेंटिव देते थे, उनको ये नुकसान हुआ। तो बड़े देशों को फायदा हुआ। इसलिए मैं आपको ये पहले जिक्र कर रहा था कि पहले G7 कंट्रीज में ये एग्रीमेंट कई सालों से वो प्रपोज कर रहे थे, लेकिन इसको जो व्यापक देश है, दूसरे देश है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब एक बड़ा कदम उठा है जहां पर OECD कंट्रीज 130 देश जिसके पार्ट हैं, उन्होंने ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया है। उसके बावजूद भी कुछ छोटे देश हैं जिन्होंने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है इसको। Moving on to our second headline story, RBI today said the recently announced monetary, regulatory and fiscal policy measures will help in the economic recovery that has been severely dented by the ferocious second wave of COVID-19. As per the 23rd issue of the Financial Stability Report released by RBI, sustained policy support, benign financial conditions and gathering momentum of vaccination are nurturing an uneven global recovery. The report also highlights the gross non-performing assets ratio is likely to increase to 9.8% in March 2022 as compared to 7.48% in March 2021. The report said the ratio may increase to 11.22% under severe stress scenarios, even though banks have sufficient capital both at the aggregate and individual level. RBI said the banks will have to reinforce their capital and liquidity positions to fortify themselves against potential balance sheet stress as they respond to credit demand in a recovering economy. The central bank in its report said the capital to risk weighted assets ratio CRAR of scheduled commercial banks increased to 16.03%. The capital to risk weighted assets ratio measures a bank's financial stability by measuring its available capital as a percentage of its risk weighted credit exposure. RBI said the provisioning coverage ratio stood at 68.86% in March 2021. Provisioning coverage ratio is a percentage of bad assets that the bank has to keep with them. Lower the asset quality, higher will be the provisioning coverage ratio. In the FSR, RBI added that policy support has helped in shoring up financial positions of banks containing non-performing loans and maintaining solvency and liquidity. It said fiscal policy measures have helped curtail the solvency risk of financial entities, stabilize markets and maintain financial stability. Puneet, there has been a lot of financial and economic jargon used in this story, but what it is saying is that the non-performing asset risk is likely to go up, but there is provisioning by the banks. Is there likely to be a higher CRR and SLR that would be imposed on the scheduled commercial banks, because CRR is 4% right now, SLR is 18%, and there has been an attempt to actually relax this so that banks have more liquidity, more capital at their disposal. What is going to be the move by RBI for provisioning against a rising NPA? You're right. I mean, a lot of economic jargon has been used in this report, but the gist of RBI's report, when I compare it to the earlier assessments, see, we have to see it in context of what RBI thought 1 year back or 2 years back. The financial condition of banks have improved quite significantly if you compare it with earlier assessments. And now in the worst case scenario, so RBI is saying that in the worst case scenario, the NPA ratio can go to 11 or 12%. But I don't think that is going to happen. That is like a scenario being given out. But if you look at the latest results and the latest balance sheet positions of banks, particularly the public sector banks, those situations have really improved, not only in terms of non-performing assets, but also in terms of capital adequacy. They have been able to raise capital from the market constantly, and they propose to raise it further. There are two benefits of doing that. One is, of course, these banks will be protected against any increase in the NPAs. And if the mandatory capital adequacy that we talk about is about 10%. And right now they're at 16%. So they can absorb any increase in non-performing assets, first of all. Secondly, with increased capital, they will also be able to lend more. Our own assessment is that the economy, as it grows out of this pandemic year, will require a lot of investments by companies. And this capital expenditure will require more credit, and only banks can provide that excess credit or that extra loans to this industry. So I think capital raising is very important, and RBI has underlined that banks need to raise more capital to be prepared for this scenario. Secondly, RBI's own assessment, overall assessment is, I would say, very positive. They have said that the interventions on the monetary side, on the fiscal side, they have all improved the financial conditions and economic conditions of the country. And overall, I think it is supportive of growth. So RBI
is unlikely to raise CRR or SLR because that will reduce the liquidity of banks. I think RBI wants to keep liquidity conditions easy. They want to keep credit flow without any hurdles. So my own sense is that RBI will maintain a benign monetary policy approach and they will not raise rates or CRR or SLR in the short term. लेते हैं अगली खबर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बावजूद इस वर्ष पहली तिमाही में भारत ने अब तक का सबसे अधिक निर्यात दर्ज किया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और निर्यात में भी वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जून के दौरान भारत ने अब तक के सर्वाधिक $95 अरब के सामान का निर्यात किया है। उन्होंने कहा कि ये 2020-21 की चौथी तिमाही के $90 अरब के उच्चतम निर्यात से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मई से चावल निर्यात की वृद्धि भी सकारात्मक बनी हुई है। ये कितना इम्पोर्टेंट है जो एक्सपोर्ट बॉयंसी हम देख रहे हैं। एक्सपोर्ट में न सिर्फ बेस इफेक्ट, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी जो बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, ये कितना एक इम्पोर्टेंट पिलर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एमएसएमईज के लिए। सुनो, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि ये भारत की जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको दर्शाता है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जो इस पिछला वर्ष 2020-21 में, हालांकि ये बहुत ही एक अजीब ईयर था क्योंकि लॉकडाउन थे और काफी चैलेंजेस थे। 17 वर्षों के बाद पहली बार भारत में ट्रेड सरप्लस, यानी हमारे एक्सपोर्ट्स जो थे वो हमारे इंपोर्ट से ज्यादा थे। तो सॉरी, करंट अकाउंट जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस था, यानी जो शॉर्ट टर्म हमारी लायबिलिटीज है वो शॉर्ट टर्म अर्निंग्स थी वो ज्यादा थी। तो ये और 17 वर्ष के बाद ऐसा हुआ। पूरे 2020-21 में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे हम कहते हैं, यानी नेट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज जो रहते हैं, उसमें $60 बिलियन से ज्यादा का इनफ्लो हुआ है भारत के फॉरेन रिजर्व्स में। तो क्लियरली ये बात साफ है कि जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है इंडियन इकोनॉमी की, वो इवन इन दिस चैलेंजिंग टाइम वो काफी बरकरार रही है। और ट्रेड का बढ़ना, यानी एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, वो एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है मैं कहूंगा। और मुझे लगता है यदि हम भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसको हमें ना सिर्फ डोमेस्टिक ग्रोथ बल्कि एक्सपोर्ट ग्रोथ उसके लिए बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक वी आर मूविंग। सो ये सब जो आंकड़े हैं, जब हम करंट अकाउंट सरप्लस की बात करते हैं या हम रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि हम आने वाले समय में वी विल बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। Puneet, we have the figures which are provisional, I think, for April to June this year, and then we have figures for the month of June from the 1st till the 14th. So the story is yet to be fully uncovered. But do you see a consistency in the two reports because of the turnaround time at the ports? Do you think infrastructure has improved, which is why we are seeing a growth in exports apart from the competitive element in the economy? So in fact, I had omitted because that is a more detailed analysis. The truth is that India has been able to export despite a lot of challenges on material handling. There's a shortage of containers. Ports are choked. China has been kind of creating a lot of hurdles in international trade. They're choking sea lanes. In spite of it, India was able to increase exports, and which is commendable. So there are a lot of challenges in our ability to increase exports. Plus, I believe that the government's policy on production-linked incentives, which will improve manufacturing sector in India, will further give certain momentum to Indian exports. So I think if you look at the data consistently, if you look at the trend, I think the graph is going up. And we should see consistent increase in India's exports and foreign exchange earnings from that sector in years to come. आइए अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का। सेंसेक्स और निफ्टी आज मामूली बढ़त पर बंद हुए। अन्य एशियाई बाजारों से संकेत नकारात्मक रहने के बावजूद इनमें लगभग 0.3% की वृद्धि आई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.32% की तेजी से 166 अंक बढ़कर 52,485 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.27% की तेजी से 42 अंक बढ़कर 15,722 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार में बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.05% की मामूली बढ़त में रहा। स्मॉल कैप सूचकांक में 1.01% की वृद्धि दर्ज हुई।
Sensex at the BSE climbed 166 points or 0.32% to finish at 52,485. Nifty at the NSE also gained 42 points or 0.27% to settle at 15,722. In the broader market at the BSE, the mid-cap index surge rose marginally by 0.05%, while the small cap index surged 1.01%. In the Sensex pack, shares of 17 companies climbed while 13 fell. ICICI Bank and Reliance were the top gainers as it surged 1.5% each, followed by SBI, which gained 1%. Puneet, for the week, we saw that metal, in fact, went down by 1.5%. Pharma picked up by 0.6%. And Nifty Bank, as far as today's trading was concerned, went up by 126 points. So what is your take on the market after the F&O expiry this Thursday? So, Arjun, overall, if you look at the market through the week, the waters were very calm. There was not much movement, actually. The index went up by small margins up and down on a daily basis. And then, so there appeared to be a lot of calm in the markets. However, the small caps were leading the rally because we saw a lot of stock-specific action. And while large caps were quiet, the small caps and the mid caps, they have been leading the charge in the markets. And that has been the story over the last few weeks. And that is largely because the participation by retail investors has gone up a lot in this market. Institutions are also participating, but the institutional participation is not that much. I think my own sense is that markets are kind of taking a breather before the next move. The next move could be up or down depending on global trends. But my own sense is that just to mention the fact that we discuss often the volatility in the markets, the volatility index, the VIX, is now almost at a historic low, which is about 12. Which shows that the market players are not very worried. They don't expect a lot of volatility in this market. So like I said, calm waters right now, at least for the time being. Let's see how things happen in the next couple of months. आइए रुक करें करेंसी बाजार का। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे की गिरावट से 74 रुपए 75 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर में मजबूती के बीच रुपए में ये गिरावट आई। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के समूह की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.06% बढ़कर 92.62 पर था। जैसा आप अभी कह रहे थे कि जो शेयर बाजार है उसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, लेकिन रुपए में जो ये बढ़त है 74 रुपए 75 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है, आपको लगता है कि ये एक चिंता का विषय है, या जैसा आप कहते रहे कि आरबीआई शायद इस लेवल से अभी खुश है? बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जो अभी हमने रुपए में मूव देखा है 73 रुपए से 75 रुपए के आसपास करीब रुपया आ गया है टू द डॉलर, वो एक आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि दे वुड लाइक रुपी टू बी स्लाइटली मोर टू बी ऑन द वीकर साइड। तो मुझे लगता है कि हमारे पास रिकॉर्ड रिजर्व्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई मजबूरी से ऐसा मूव हुआ है। ये मेरे एक सोची समझी मैं कहूंगा एक स्ट्रैटेजी है आरबीआई की कि वो रुपी को एक नैरो रेंज में रखना चाहते हैं जिससे हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस वो बरकरार रहे। जी, आइए चलें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। निवेशक आज जारी होने वाली अमेरिका की रोजगार रिपोर्ट से अतिरिक्त संकेतों के इंतजार में थे और एशियाई बाजारों में रुख मिला जुला था। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 2% लुढ़क गया और हांगकांग के हैंगसेंग में 1.7% की गिरावट दर्ज हुई। जापान का निक्केई 0.3% की बढ़त में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.2% की वृद्धि में रहा और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां रुख तेजी का था, लेकिन कारोबार सीमित दायरे में हो रहा था। लंदन का फुटसी 0.1% की बढ़त पर था और जर्मनी का डैक्स 0.4% की वृद्धि में था। फ्रांस का कैक लगभग स्थिर था। Moving on to the U.S. market, the S&P 500 logged its 6th consecutive all-time closing high yesterday as a new quarter and the second half of the year began with upbeat economic data and a broad-based rally. Investors now eye today's much-anticipated employment report. The Dow Jones Industrial Average gained 0.4%, the S&P 500 climbed 0.5%, and the Nasdaq Composite Index added 0.1%. Puneet, your take on the anticipated employment report in the context of the infrastructure plan that the U.S. government has for its economy, which has been passed by the Senate. So what is the rollout likely to be, and how do you see employment and income improving after all the social spending? So, Arjun, clearly the U.S. economy is reopening much faster than we had thought.
So it's picking pace, and we see that the retail sales data has also been good. So general expectation is that employment data will also improve. Of course, the rollout of the infrastructure spending will take some time, but I think over the next 3 to 6 months, we will start seeing projects on the ground, and economic activity will pick up in US. So right now, of course, they're looking at employment data, which may not be very different from last month, but I think going forward, employment data in US will improve quite significantly on the back of reopening, plus the infra spending that government might undertake. पुनीत, आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कमोडिटी प्राइसेस में वृद्धि और इन्फ्लेशन को एक मेन खतरा बताया है। सो आपको लगता है कि यूएस में जो रिवाइवल हो रहा है, अपबीट इकोनॉमिक डेटा है, उसको देखते हुए शायद इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के जो खतरा है वो और करीब आ जाएगा और उससे बाजारों के लिए एक बुरी खबर हो सकती है? आयरॉनिकली अच्छी खबर में बुरी खबर। देखिए, ये खतरा अगर इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, तो उसका बहुत खतरा रहता है। फिर नेचुरली इंटरेस्ट रेट बढ़ करके वो मार्केट्स को हर्ट कर सकते हैं, डिमांड को हर्ट कर सकते हैं। पर मुझे लगता है जो हमने देखा है अभी मेटल्स में इंक्रीज और बाकी सब कमोडिटीज में, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन थी, सप्लाई नहीं मिल रही थी, तो वहां पर बहुत एक असर आया था कमोडिटीज के ऊपर। ये अगर आने वाले 3 से 6 महीने में सप्लाईज, जैसे ऑयल में आप देख रहे हैं, आउटपुट कट है, वहां पर सप्लाई कम हो गई है तो प्राइस ज्यादा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑयल की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब ये नॉर्मलाइज होना शुरू होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो कमोडिटी प्राइसेस अगर नीचे नहीं आएंगी तो डेफिनेटली करंट लेवल पे स्टेबलाइज हो सकती है, तो उससे इन्फ्लेशन का थोड़ा थ्रेट कम होगा। Puneet, very briefly, the discount rate has not been changed by the Federal Reserve, and 2024 is the target year when they may change. In fact, the foreign inflows into the emerging markets, the capital markets, has gone up, including India, for the month of June. So what is really the attitude of the FPI, who is originating from the US? So FPIs, of course, have it very good because they have a lot of liquidity at low cost in the US. They're investing in US, but a lot of that money is going into emerging markets where growth is happening. And India, of course, has been the 5th largest recipient of FDI in the world. So clearly, we are benefited. The US Fed has said that they will not raise rates at least until 2023. So I think we have another couple of years of good inflows before us, and FPI is also not scared. No, they don't anticipate any increase in interest rates in the next couple of years. So they might continue to pour money into Indian markets. Moving on to the oil market, Brent crude prices were trading around $75.40 per barrel, while WTI crude prices were around $74.70 per barrel. Like in the Money Matters program, the question was put about the OPEC Plus meeting on the 1st. What has happened to that? What is the likely outcome in terms of production and supply and the prices? So Saudi Arabia shut down a deal to increase the output on that meeting, and therefore it's kind of postponed a little bit, and therefore the oil prices went up. But my sense is it is inevitable that they will raise output by about 400,000 barrels per day. That is what they are talking about, progressively for next few months. So sooner or later production will go up, and my own sense is that market cannot take a higher oil price, and it will kind of stabilize in the current range, at least for the next few months. पुनीत, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। धन्यवाद सोनू। और चलते चलते सोने पर एक नजर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य 300 रुपए बढ़कर 47,340 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 550 रुपए के उछाल से 68,705 रुपए प्रति किलो के करीब थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,786.80 प्रति आउंस पर था। चांदी भी बढ़त के साथ $26.30 प्रति आउंस पर थी। And before we close, a reminder of the headlines. India joins OECD and G20 inclusive framework tax deal of global corporate tax. RBI flags emerging threats to economic recovery from soaring commodity prices and new COVID variants. Says the financial system is resilient enough to deal with such jolts. India records the highest ever exports in the first quarter of the current fiscal, and domestic stocks finish with modest gains. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra, Mantra. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.
market mantra.